I gave my interview to the best of my abilities और again it was also a very big surprise. जैसे सबके लिए होता है मेरा भी हुआ था. When my name came in the final select list, it took time, it took days to sink in that you are now an Indian Forest Service officer. It was a great moment in my life. मेरा नाम विश्वकन्नन है, पी विश्वकन्नन. I belong to Indian Forest Service and 2003 batch. I secured 17th rank in UPSC for the Indian Forest Service examination. And after that हम लोगों का टाइम में 3 साल का ट्रेनिंग रहता था. ट्रेनिंग के बाद फिर फॉरेस्ट सर्विस बीइंग एन ऑल इंडिया सर्विस हम लोगों का कार्डर अलॉट होता था. उसमें मुझे अगमुट कार्डर मिला है. अगमुट इज़ अरुणाचल, गोवा, मिज़ोरम एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज. So that's how my professional career started. I was born in a town called Salem in Tamil Nadu. So basically मेरे parents are like kind of we are from एक छोटा सा गांव से थे. और मेरा पिताजी was an ex-serviceman. He's a retired army personnel. He worked in Indian Army. उसके बाद फिर he came to village and started farming. I'm not from a very very rich family, from a lower middle class family था. और so I was in that setup where life was not so easy. And जब भी मैं मेरे पिताजी के साथ रहता था, he always used to say that you should study well and try to reach good position in life. वो अभी भी याद है जब मुझे एक बार कहते थे कि जो बिकॉज ही वॉज बेसिकली एन एग्रीकल्चरिस्ट. और वो बताते कि इफ़ यू डिसाइड टू डू फार्मिंग, इट्स नॉट सो ईजी टास्क. इट इज़ लाइक एक्सट्रैक्टिंग जूस फ्रॉम सम आयरन. जैसे लोहे से जैसा जूस निकालने का जैसा बहुत मुश्किल काम होता था बोलते थे. वो हमेशा मेरे लिए एक इंस्पायरिंग वर्ड्स रहता था टू ऑलवेज टू वर्क हार्ड एंड अचीव ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ. I did reasonably well in class 10. और क्लास 12 जब आया था वहाँ उस टाइम भी देयर वर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे. और हम लोगों का भी वहाँ पर भी 2 चीज़ होता था. एक मेडिसिन तैयारी करते थे मेडिकल MBBS के लिए, और दूसरे इंजीनियरिंग के लिए तैयारी हो सकते थे. और मेरा तो उस टाइम इतना कुछ खास नहीं हुआ था. सो आई डिडंट क्वालिफाई फॉर either of these things. Though my 12th marks percentage was reasonably good, but मुझे इस दोनों में तो अच्छा सीट नहीं मिला था. Then I had a very good well-wisher who was also my neighbor. He suggested me, why don't you try, because your score is good, but not so bad, it's good, you should try some other courses in other states. फिर I applied in Maharashtra. So I studied my graduation from Maharashtra. वहाँ पर other state कोटा होता था. So I studied BSc Agriculture in a government college in Maharashtra. So when I got into the college, I felt that yes, I should have done better in life. So तब से मैं थोड़ा सा something was, I had an urge that कुछ कर दिखाना है ज़िंदगी में. So with that point of time, I only the goal was to get admission in some higher studies in good colleges. Being agriculture graduate, there is an organization called Indian Council of Agricultural Research. वहाँ पर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम कराते थे. सो जब भी मैं PG पढ़ता था, जब कॉलेज एग्ज़ाम्स के साथ साथ मैं इसका भी तैयारी शुरू कर दिया था. सो दिस बीइंग ए प्रोफेशनल कोर्स, BSc एग्रीकल्चर बीइंग ए प्रोफेशनल कोर्स, इट्स ए 4 years कोर्स. सो जैसा ये कोर्स ख़त्म किया था, सो आई गेव दैट एग्ज़ाम. इट्स कॉल्ड एज ICAR postgraduate exam. That's basically for MSc agriculture in good colleges across the country. Though I didn't have very good guidance for preparation, but I could manage to secure a decent rank in that examination. So I got an admission in GB Pant University. It's in Pantnagar. It's a very famous university. It's one of the biggest land university in the whole of Asia. So it's in Pantnagar. These days it's in Uttarakhand का Pantnagar University से मैंने MSc किया. MSc करते करते फिर I thought so because
those days, maybe around 2000, the job opportunities are not like so diverse, so high like what we have these days. Only government jobs are considered as the best job opportunity. So थोड़ा बहुत मन में कहीं लगा कि we should try for some good government jobs. मुझे अभी भी याद है कि because having not, I don't have a very strong background of maybe the language skills, vocabulary skills. So अभी मुझे भी याद है हम लोग अखबार लेते थे, हिंदू पेपर, आई रिमेंबर. उसके बाद फिर पढ़ते थे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे, आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक कॉपी लेके उसमें लिख के रखता था. फिर उसका मीनिंग, उस टाइम तो डिक्शनरी, आजकल तो इजीली मिल जाता है आपको, उस टाइम डिक्शनरी लेके हम लोग हर एक शब्द का उसका मीनिंग लिखते थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर उसका फिर हम लोग आई ट्राई टू याद करते थे, बार बार उसको रिवाइज करते थे, याद करते. दैट्स हाउ आई ट्राई टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज स्किल्स, वोकैबुलरी स्किल्स दोज डेज. फिर उसके बाद एक then what next in life, that question comes, what next in life. So what we did was, because frankly speaking I never thought of civil service much seriously in those time. So then I thought what next. So जैसा मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एम्स होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिमिलरली फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स there is an institute called Indian Agriculture Research Institute in New Delhi. We also, it's popularly known as PUSA Institute. So जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होता है उसका एक सपना होता है कि उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए. सो आई ऑल्सो सीरियसली प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन, बिकॉज Indian agriculture, it's a campus where you have all the best brains in the agriculture sector there. So it was my dream. I consider myself as lucky, क्योंकि मुझे वहाँ पर 2 साल मतलब MSc ख़त्म करते ही मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल गया था. And in fact I would say that's the happiest moment in my life. जब मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेरा सिलेक्शन हो गया था, उससे भी ज़्यादा उस टाइम खुशी था जब मुझे एडमिशन मिल गया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा इंस्टीट्यूट में. फिर पूसा जब एडमिशन मिल गया था, सो was happy to be in Delhi, one of the top-notch institute in the agriculture sector. Then the question came, what next? So because पढ़ाई तो चल ही रहा था, because once you have done your, this was an admission for the PhD program. So उसके next, what next? So I know then at that time maybe around 2000s, Indian Agriculture Research Institute, वहाँ पर पूरा सिविल सर्विस का माहौल था. Of course people prepared, some people aspire to be scientists, some aspire to be civil servants. So when I got into that institute, फिर maybe around after 1 year I also started seriously preparing for this examination. So I must confess that the campus itself was the main motivation for me to get into these civil services. So 1 साल के बाद फिर I started preparing for the examination. So there it was like an very congenial atmosphere for all those things, because being in the heart of Delhi, we had all the facilities. We had facilities for coaching, and we had a very good peer group where we used to discuss among ourselves कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, कैसे करना है. So उस हिसाब से, so I was fortunate enough, because before finishing my PhD program I got into Indian Forest Service. अगर कहना है तो मेरा first attempt था, because the previous attempt I didn't write all the papers. I think due to some reason I couldn't appear. फिर जब मैं first serious attempt हुआ तो I gave first attempt very seriously, all the papers. I never thought I'll get selected for the interview. When my name came for interview, it was a very big surprise for me. I didn't believe. So मैं खुद जाके मेरे फ्रेंड्स आके बता रहे थे कि यार तुम्हारा भी नाम इसमें आ गया, बट आई डिडंट बिलीव. उस टाइम तो अभी जैसा नहीं, मुझे फिर हमारा जहाँ कंप्यूटर सेंटर था वहाँ जाना पड़ा. देन आई हैड टू सी फॉर माई सेल्फ टू गेट मतलब टू इंश्योर दैट कि मेरा भी नाम उसमें आ गया. इट वॉज अ बिग सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी. देन ऑफ कोर्स उसके बाद फिर तैयारी करते थे, बिकॉज देन इट वॉज एन वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब्स देयर. लोग बोलते थे जब व्हेन यू आर इन इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जब पूसा इंस्टीट्यूट में आपका तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में होना आसान है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. सो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स कलीग्स वर गेटिंग सेलेक्टेड. सो उसके बाद मैंने भी काफ़ी मेहनत की, तैयारी की थी.
और तैयारी की थी और आई गेव माई इंटरव्यू टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़ और अगेन इट वॉज ऑल्सो ए वेरी बिग सरप्राइज जैसे सबके लिए होता है मेरा भी हुआ था व्हेन माई नेम केम इन द फाइनल सेलेक्ट लिस्ट. It took time, it took days to sink in that you are now an Indian Forest Service officer. It was a great moment in my life, and I always think that I should be grateful. I should be thankful to this great nation, this where the democratic setup one can achieve because of one's sheer hard work. So these are great things about our nation. So I always feel grateful towards my country, my parents, my teachers, and my family for all my success. And so that's a brief about my journey, how I got into the service. And और दूसरा एक है कि आप सब जानते हो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है. इसमें एक है कि इवन फॉर अदर सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इवन इफ आई से इंडियन पुलिस सर्विस विच इज सपोज टू बी वेरी टफ, उनका भी ट्रेनिंग जो है सेलेक्ट होने के बाद होता है. बट लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ऐसा है कि आपका 25 किलोमीटर्स वॉकिंग इंटरव्यू सेलेक्ट होने से वंस यू क्वालिफाई दिस फिजिकल वॉकिंग टेस्ट देन योर नेम विल बी इन दी फाइनल सेलेक्ट लिस्ट. सो अभी मुझे भी याद है यहाँ पर दिल्ली में जो नेशनल जू है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, वहाँ पर हम लोगों को वॉकिंग टेस्ट उसको बोलते हैं. ये भी मुझे याद है कि हम लोगों को पहले कोई आदत तो नहीं था चलने के लिए. 25 किलोमीटर्स करते करते आई कैन रिमेंबर ऑल ब्लिस्टर्स, मेरे पूरा पैर में पूरा ब्लिस्टर्स आ गए थे बिकॉज इतना चलने का आदत नहीं था. But we did it with great difficulty and was very happy that I got finally selected into the service. And that's it about this brief story of my selection into this Indian Forest Service. जैसे बताया, this being an all India service, हम लोग selection होने के बाद एक cadre allot होता है. So we have this cadre is common for all the three all India service: Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Forest Service. मैं जैसे बोला, मुझे अगमुट कार्डर मिल गया था. अगमुट इज़ अरुणाचल, गोवा, मिज़ोरम एंड ऑल यूटीज़. सो माई फर्स्ट पोस्टिंग वॉज इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स. और हम लोग ट्रेनिंग के बाद 2005 में गए थे. आप सब जानते हैं उसी टाइम जस्ट पहले इसमें वहाँ अंडमान में सुनामी वगैरह आया हुआ था. So it was very, there were just the islands were recovering. There were a lot of rehabilitation works happening after the tsunami. We know that it was a very disastrous tsunami. A lot of loss of life and property happened in those islands. Then I landed in those islands. I did my training there, and after training, मेरा first posting हुई थी निकोबार आइलैंड्स. ग्रेट निकोबार करके हमारा एक आइलैंड है. पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स. इट इज़ द सदर्न मोस्ट टिप जो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वो उसी आइलैंड में है. सो वहाँ पर मैं फर्स्ट पोस्टिंग वॉज देयर एज ए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ निकोबार डिवीजन. सो आई वर्कड देयर फॉर 2 years. So that was again a very very interesting and challenging phase because it almost took 30 hours by boat. वहाँ से by boat में अगर हम लोग निकोबार, उसको कैम्बल बे बोलते हैं. कैम्बल बे इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ निकोबार आइलैंड्स. फ्रॉम देयर इट टुक ऑलमोस्ट 30 hours टू रीच पोर्ट ब्लेयर विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स. अगर बाय हेलीकॉप्टर चॉपर से आने से इट टुक ऑलमोस्ट 2 hours. देयर वाज एन रिफ्यूलिंग पॉइंट एट कार निकोबार. सो जब मैं डिवीज़न में जब कैम्बल बे में लैंड हुआ तो थिंग्स वेर नॉट सो गुड बिकॉज almost all the infrastructure was lost because of tsunami. में सब चला गया था. इवन जो ऑफिसर्स का, बहुत सारे ऑफिसर्स के लिए घर भी नहीं था. वी वेर ऑल इन some other quarters. So it was I took best of the efforts to develop the infrastructure because we had, that's a very ecologically very sensitive island. जैसा we have this वहाँ पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है. There are गलतिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. वहाँ पर also a tribal reserve, शोम्पन ट्राइबल्स भी वहाँ पर है. So we have the forest department. It was very challenging because we had to build lot of infrastructure. हमारे स्टाफ के क्वार्टर्स नहीं थे, ऑफिसर्स के क्वार्टर्स नहीं थे. Even office was running in a makeshift kind of arrangements. So I gave my best for developing
basic facilities for the staff, for the department, for the officers. And also it was a great opportunity. I was among the first team which went to the Indira Point after the tsunami. वहाँ पर जाने के लिए रोड वगैरह रहता था, छोटे बड़े बोट में जाते थे, फिर छोटे डिंगी में जाते थे, उसके बाद फिर वहाँ पर हम लोग पहुँचे। और मुझे अभी याद है कि हम लोग एक रात वहाँ रुके भी थे, मतलब वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, फिर भी हम लोग वहीं रुके थे इंदिरा पॉइंट में, which is the southernmost point. While working as DFO, because those islands are very remote, जहाँ पर बहुत सुंदर है लेकिन बहुत remote है. So because as a forest officer I had a lot of opportunities. So I had developed a lot of ecotourism sites which was very well recognized by the local people, by the whole administration. And I'm also very glad to say that the Andaman Nicobar administration recognized me and I was given a commendation certificate for all my initiatives in this field of ecotourism. So ecotourism is basically developing tourism in nature places inside the forest or inside the sea beaches without causing much damage to the local ecosystem, local ecology. So which the people, local people appreciated, and I am very happy that people do still remember me. Almost it's more than 10 years I left those islands. People still fondly remember me for all those small initiatives which I did in all those remote islands of Andaman Nicobar Islands. So I also got an opportunity to work as in the tourism sector of Andaman Nicobar Islands. I worked as Director of Tourism for close to 3 years. I also contributed in the tourism sector, in development of the tourism sector of the Andaman Nicobar Islands. That's also a very satisfying tenure for serving the people of the Andaman Nicobar Islands. Apart from that, I also had the opportunity to work in the Indira Gandhi National Forest Academy as a faculty member. This is the academy where Indian Forest Service officers, on getting selected into the service, everyone has to undergo training. This days it's for 2 years. So I had the opportunity to work there for almost for 5 years, training various officers across from the year 2016 to 21. So it's again a very fulfilling and very satisfying career for 5 years, where we get to interact with young minds, we get to mold them, we get to train them, we get to share your experiences with them. So that's, I think, a very interesting part of my career. Apart from that, because this being an all India service, which is common for both state and central, so I got an opportunity to work in the central government also. I worked in the Jal Shakti Ministry, Department of Drinking Water and Sanitation, in the very well-known program Jal Jeevan Mission. I was working as a director there for close to 2 years, so I got a very good exposure of the drinking water sector across the country. So I had an opportunity to travel widely within the country and an opportunity to learn how such a very important, very big scheme operates at the state level, at the central level. So that's a great exposure for me. I should be grateful to all my seniors who gave me that opportunity. After serving there for 2 years, because we have our certain service rules. If you work in the central government, you cannot work for more than 7 years. So I got posted to this Delhi segment. Delhi segment is also part of Agmut cadre, because this is then being an UT with assembly. So for almost 2.5 years, I have been working here as Chief Conservator of Forest here. So here I am getting to learn a lot of things about the challenges of maintaining this urban greenery. So urban forest is a very important sector. Here we are trying to strike a balance between development, because the city, Delhi is a capital city, is a growing city, it's with a lot of great aspirations. So we are trying to strike a balance between the conservation of nature and the development here. So here I'm also working as the nodal officer for forest conservation, where we get to divert lands, forest lands and forest-like lands for development activities. एक इंटरेस्टिंग चीज़ था, जब 2003 में मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया था, when I cleared my Indian Forest Service. The same year I also cleared my civil service prelims also. मन में थोड़ा सा द्विधा था कि मुझे सिविल सर्विस कंटिन्यू करना चाहिए कि आई शुड जॉइन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. सो बिकॉज
Without thinking much, I joined the service. Or luckily I got a cadre where there is huge diversity. This is a cadre where we can work right from अभी तो जब Jammu and Kashmir भी इस cadre का part हो गया. So this is a cadre which gives you wide opportunities. One can work from the Great Nicobar to the Ladakh to Lakshadweep to Arunachal Pradesh, Mizoram. I think that's a great opportunity to work.